Okay. Hello everyone. Audio video clear achi? So I'm your Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang Civil Services, powered by Vedang Institute of Technology. Audio video everything is clear? Tell me that. Then we'll start the session. को माने class represent अच्छा? जल्दी आसी जाओ सामना को. को माने सब class रे जी present अच्छा? सुनना नाइक. Evening बाबू evening. तो जेमिति कि आपण माने जानी चंदी डायरेक्ट जीवा. ओके क्वेश्चन एंड आंसर ऊपर को लास्ट तम मानक पई प्रमोशन स्लाइड अछि. तो वर्तमान पई मते कुह सब जल्दी जल्दी कनेक्ट हो सो दैट क्लास आज बहुत इंटरेस्टिंग अछि. पूरा मिक्स है कि क्लास अछि. क्वेश्चन सब मिक्स आसीबो तम मानकर. एमिति नाही कि ओनली ओपीएससी पिला जो माने ओसीएस में प्रिपेयर हो जंदी से माने ही अटेंड करि परिबे. नॉट एक्जेक्टली दैट. बट जो माने प्रिपरेशन करूचंती एसएससी लेवल रे से मानकर भी हेल्पफुल हबो एंड हमर ओपीएससी एसओ ता पई भी हेल्पफुल हबो बिकॉज़ एटा आपनकर ईवीएस मिक्स करके क्वेश्चंस अछि. गुड इवनिंग लोपा. वेरी गुड इवनिंग. गुड टू सी यू अगेन. चलो तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिबा. देखिबा फर्स्ट क्वेश्चंस कोन अछि. डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करिछि. तो फर्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मते आंसर दरकार एंड राइट आंसर दबो. टिके टाइम नियो पढी कि दियो बट आंसर टिके ठीक ठाक दियो सो दैट मु जानिबे किछि त आईडिया त मानकर अछि हैला. सो मते कुह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कहिले त माने कोन बुझछ किछि आईडिया अछि. इकोसिस्टम कहिले कोन त माने बुझछ मते कहिलो. दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया. A group of organisms of the same species आमे ताकू कोन कहिबा. ताकू कोन हम इकोसिस्टम कहिबा कि नो दिस इज द पॉपुलेशन. दिस इज नॉट एन इकोसिस्टम. बरम आमे कोन कहूचे ना मैम आमे को पॉपुलेशन कहिबा. व्हाट्स नेक्स्ट ना ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया और द सेम हैबिटेट. एठी एरिया कहिनी एठी सेम हैबिटेट कथा पचरिची. ताहाले मते कुओ एटा कोन सेम हबो कि the same habitat upare pole asila. That is a group of different species living together for the habitat only. Tahale ame taku kon कहउचे ना this is the community. याको ame kon कहिबा ना it is called as the community. The question kon पचरछि ना about ecosystem. Next पढिबा ना a community of organisms interacting with each other and with their physical environment. कोन एटा राइट आंसर हबो कि टुना एंड लोपा. एटा राइट आंसर हबो कि yes. So a community interacting with a physical environment, that is because it's include the biotic, abiotic plus interaction. जेते बेले both आपनकर biotic add होउची कोन add होउची ना biotic add होउची plus abiotic add होउची plus interaction add होउची कोन ना interaction add होउची ताकू हमें कहूचे that is the ecosystem. And what's about the next one ताकू भी देखि देबा टिके. like a physical environment without any living organism. गोटे physical माने हमें environment कहूचे but that doesn't have any कोन ना environment माने living organisms किछि नथिबो ताहाले biotic रो opposite कोन कहूचे ना देखो abiotic कहिबा. the abiotic components alone that cannot form an ecosystem but this can be the abiotic component. एतिकी बुझी परिलो. the a physical environment without any living organism जते बेले कहि देछि without any living that means एटा कोथिरे डिनोट करिबा हमें ना as a abiotic डिनोट करिबा. yes or no. yes. the next question कोन पछाछि मते गु आंसर दबो. त माने आंसर दियो कोठी रॉन्ग होछ राइट होछ मु ताको एक्सप्लेन कर देबी हैला. पार्टिसिपेट करो. that's the important thing. मते को which of the following is not an abiotic factor in an ecosystem. अच्छा इकोसिस्टम कथा जानि देला कोटा को हमें कहूचे हैला. डिफरेंट कम्युनिटीज एकाठी जते बेले रहिबे गोटे हैबिटेट ऊपर डिपेंड करूछ हम ता कम्युनिटी कहूचे. बट जते बेले डिफरेंट इकोसिस्टम कहले कोन बुझिचे ना कम्युनिटी इंटरैक्टिंग विथ फिजिकल एनवायरनमेंट माने बायोटिक एबायोटिक प्लस इंटरैक्शंस हे गले ताको हमें कहूचे इकोसिस्टम. बट एथर क्वेश्चंस कोन पचारछि ना नॉट एन एबायोटिक फैक्टर. कोटा गोटे एबायोटिक फैक्टर नुह. कौन हम राइट आंसर सॉइल रा पीएच नॉन लिविंग केमिकल कंडीशन जोटा को अबायोटिक डिनोट करूची. द सॉइल रा पीएच कहा पर डिपेंड करे द नॉन लिविंग केमिकल कंडीशंस ऊपर डिपेंड करे.
ये सॉइल रे केते मात्रा रे अछि ताको डिपेंड करिवो सॉइल रो pH लेवल सो दिस इज द एबायोटिक वन ये हमर हबो कि नो नॉट एट ऑल ये हमर हबोनी देन आसे लाइट इंटेंसिटी तो नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर ये भी हमर पळे आसला ये भी हमर कोन एबायोटिक हे गला ये भी हमर एबायोटिक हे गला देन आसला कोन प्रिडेशन एटी कोन पछाची व्हिच इज नॉट एन एबायोटिक दैट मींस कोटा आपनकर बायोटिक सेटा को आपन माने राइट आंसर मारी परिबे होना नै मते कोंतु यस तो प्रिडेशन माने कोन बुझिसो ना द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ द कोन ना द इंटरैक्शन बिटवीन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने बायोटिक जो माने रहउचंती जेते लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहउचंती तांको तांको परस्पर भितर जेते इंटरैक्शन करूचंती तांको हमें कहूचे दैट इज द प्रिडेशन द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज द प्रिडेशन बुझिएला इंटरैक्शन बिटवीन the living organisms yes got it or not बुझी होची ना कोठी किछि डाउट होची मते को बाकी टेंपरेचर तमन जानतो दैट इज अ क्लाइमेट लाइक फिजिकल फैक्टर दैट्स आल्सो ए अबायोटिक थिंग ये भी आपनकर कोन ना अबायोटिक थिंग नॉट अ बायोटिक वन क्लियर वेरी क्लियर नेक्स्ट बा ना कोठी डाउट रहउची मते कहइबो in a typical food chain कोन कथा कहिला ना typical food chain कथाटी पछारी देछ that is which trophic level receives maximum energy directly from the sun हां predation हबो इट्स ओके बुझो त माने that is important को मते एटी कोन पछाची ना maximum energy directly from sun किए पाउछ मते कहिलो obviously जे टॉप रे रहिथिबो कोन जेते बेले हमें देखुचे गोटे ट्रॉपिक लेवल देखुचे होना नै को तो हमें वेराइटीज टॉपिक लेवल देखुचे तो जी टॉप रे थिबो सी ही तो सन तो पाखरे अछि ना तो सी ही तो डायरेक्ट सनलाइट पाउथबो ताहाले हमें कहि परिबा कि दैट इज द प्राइमरी वन दैट मींस हमर कोन ना प्राइमरी प्रोड्यूसर सी हबो दैट मींस द प्लांट हेला द algae हेला ए माने एब्जॉर्ब करंती सनलाइट डायरेक्ट थ्रू द फोटोसिंथेसिस तो प्राइमरी हमें कहा को कहिबा ना द plants and the algae ए मानु को हमें कहि परिबा कारण दे absorb the sunlight directly absorbs the sunlight it is लिखि देछि directly through what ना through the process of photosynthesis directly through photosynthesis got it बुझी पारु छ ना नाही yes or no yes बुझा पडुची वेरी गुड ताहाले मते कहले सेकेंडरी कंज्यूमर कहले त माने को लेवल को एठी त माने प्राइमरी कंज्यूमर को रखिलो देन सेकेंडरी कंज्यूमर रे कहा को रखुचो ना जो माने हर्बिवोर्स को ईट करूचंती दे आर फादर अवे फ्रॉम द एनर्जी सोर्सेस कारण ये आपन आहुरी दूर रे जो माने हर्बिवोर्स को खाउचंती दे आर डिपेंडेंट ओवर द हर्बिवोर्स तांको हमें कहि परिबा द ईट द हर्बिवोर्स तो कहार एग्जांपल ले परिबो त माने eat herbivores they are the secondary one and then asila sorry they are the primary consumers then secondary को माने आसीबे sorry primary secondary consumers आपण कर आसी जिबे जो माने eat करसंती herbivores को primary consumer हमें कहा को कहि परिबे मते को जे कि obtain करूथबे energy by eating the plants that means plant माने को ऊपर suppose deer हेला rabbit हेला goat हेला ना लोका मुद्रा rabbit and goat ए माने जिबे कोथरे ना प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर जो माने से मानो को खाइबे से मानो को हमें कहिबा दे ईट द हर्बिवोर्स को माने ना जो माने गोट थिबे हरनी को छेली थिबे ठेकुआ थिबे जो माने प्लांट्स खाउतबे से माने होचंदी हर्बिवोर्स जो माने हर्बिवोर्स को खाउचंदी से माने द सेकेंडरी कंज्यूमर्स ठीक अछि एंड डिकम्पोजर्स आपण माने ऑलरेडी जानि सम जो माने डेड मैटर ऊपर डिपेंड करंती जो माने डेड मैटर को खाई की नष्ट करी की हमर कोन माटी सहित मिसांती ताको हम कहि परिबा दे द डिकम्पोजर्स हन नै मते को दे आर द इनडायरेक्ट वन यस और नो ता पर मते को पिरामिड ऊपर क्वेश्चन अछि व्हिच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट व्हिच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इथु अपराइट कोटा रहिबो व्हिच पिरामिड फास्ट कोन देछि ना पिरामिड ऑफ नंबर्स मते को पिरामिड ऑफ नंबर्स के अपराइट हबो की एग्जांपल आपण नै परिबे वन ट्री हैज थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हन नै मते को गोटे ट्री रे आपनकर केतेटा इंसेक्ट्स थाय दैट कैन मेनी thousands of insects amar thai pare but it can be invert kono na apanakara pyramid of numbers can be inverted yes or no it can be inverted the pyramid of biomass कहले कोन बुझिबो
What's about the pyramid of biomass? मते ଟିକେ कुह ना in the aquatic ecosystem the biomass of the pyramid becomes the inverted. जेतेबेले aquatic ecosystem कथा बुझिबो सेतेबेले आपनकर pyramid of biomass ता भी कोन हबो ना ये भी आपनकर inverted ही हबो. Then रहिला pyramid of energy एटा आपण मान जानि संति कि generally upright रही थाए but that is the exceptions exist कोठी always तो always upright एठी रहिबो एठी आपण को कोन पचारछि ना always ए जो always word टा पचारि दबो सेटा आपण माने आखि कान बंद करिकि pyramid of energy ही मारिबे. यदि only upright पचारछि not having a single word always आपनकर सेठी मेंशन नाही ताहाले आपण माने ताको rethink करि परिबे. But जदि always upright करिछि जदि always what टा exist करि जाइछि that means आखि कान बंद करिकि pyramid of energy करबे. Am I clear? Next question देखो बाकी pyramid of productivity that is nothing आपण माने ताको skip करि परिबे हैला clear and ए जो pyramid of energy आपण माने मन रखंतु always upright due to कोन ना 10% energy law एटा भी आपनकर सब बेले कोथरे ना 10% energy loss हुए प्रति स्टेप रे सो याको हमें 10% energy law बोली भी कहूचे हैला नेक्स्ट आसो हां तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मते दबो टेल मी व्हिच biogeochemical cycle lacks a significant gaseous phase को biogeochemical cycle आपण कहूची that lack a significant gaseous energy state 10% energy loss yes लोपा तो मते यार को the cycle lacking gaseous phase जो cycle आपनकर lacking करूची gaseous phase हम ताकू कोन कहूचे नाइट्रोजन साइकिल कहि परिबा कि नो that has major atmospheric phase N2 gas रे हमर कोन that is मेजर आपनकर कोन N2 phase रे ही हबो N2 नाइट्रोजन गैस रे हबो the carbon cycle हबो कि the carbon dioxide in atmosphere that is the gaseous phase in the present so हमें ताको भी skip करि परिबा but first about the phosphorus cycle that is no major atmospheric form आपण माने नाइट्रोजन पढि चंती नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन फिक्सेशन ऑक्सीजन साइकिल आपण मान जानछंती O2 रु O3 की केमती एटमॉस्फेयर रे कन्वर्ट होउची ऑक्सीजन रु ओजोन को केमती कन्वर्ट होउची आपण माने ऑक्सीजन साइकिल भी पढि चंती बट कोन फास्फोरस केबे पढि चंती कि सो हमें आपको एलिमिनेट करि परिबा यस और नो यस यस नेक्स्ट क्वेश्चन मते को a species whose removal causes drastic ecosystem changes is called गोटे स्पेसीज अछि जहार रिमूवल रे हमर ड्रास्टिक इकोसिस्टम ही चेंज हे जिवो सेटा को हमें कोन कहूचे दैट इज द एंडेमिक स्पेसीज कहिबा दैट इज द इंडिकेटर कहिबा दैट इज द कीस्टोन कहिबा और दैट इज द एक्सोटिक स्पेसीज बोली कहिबा कोन कहिबा हमें ताको मते कहिलो द स्पेसीज whose removal collapse the ecosystem जल्दी मते को endemic species तो बिल्कुल हवनी yes that can be what ना that can be the exotic सब मारुचो समस्त exotic मारुचो काहे कि keystone हबो लोपा keystone हबो because the maintains keystone आपनकर कोन करिबा ना it maintains the ecological balance that removal causes the collapse तो रिमूव हैला परे से कोलैप्स हे जाय सेति पई एक keystone मने रखो stone वाडू stone आपे काहे कि रखुचे घरे हमें stone रखुचे बैलेंस करिबा लागि घर तयारी बेले bricks रो काम कोन कि गोटे प्रॉपर स्ट्रक्चर दबा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर दबा हम घर को होना नहीं मत देखो सो ता अकॉर्डिंग आपण माने मन रख परिबे द एक्सोटिक इज द नॉन नेटिव वन दैट मे बिकम द इन्हांसिव बट नॉट द कीस्टोन माने बट नॉट द कीस्टोन लाइक बुझी पाले एति की द इंडिकेटर इज नेवर पॉसिबल इंडिकेटर आपनकर केबे हबो कि नो द इंडिकेटर आपनकर ऑलवेज रिफ्लेक्ट करिवो एनवायरनमेंटल कंडीशंस को दैट इज नॉट द स्ट्रक्चरल कीस्टोन होना नहीं नेक्स्ट को मते द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपनकर कोन हबो मते को जल्दी biodiversity hotspots आपनकर कोन हो quick the biodiversity hotspots that has a high richness low endemism high threat low richness high density high population of one species कौन होगा राइट आंसर देखो हाई रिचनेस लो एंडेमिज्म हेले होबनी बिकॉज़ हॉटस्पॉट्स मस्ट हैव द हाई एंडेमिज्म तो जोठी भी आपण माने कर हाई एंडेमिज्म आपण माने देखिबे सेठी होबो हॉटस्पॉट रो डेफिनेशन ताकू सैटिस्फाई करिवो लोपा डी बिल्कुल नाही हाई एंडेमिज्म हेबा दुनियादी दरकार बिकॉज़ हाई एंडेमिज्म दरकार हाई थ्रेट भी दरकार हॉटस्पॉट रो क्राइटेरिया कोन
मोर देन आमे कहि परिबा 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज अछि एंड 70% हैबिटेट लॉस भी होसंती तो एठी थ्रेट भी अधिक रहउची एंड स्पीसीज भी सेमाने सेही अकॉर्डिंग सेथिरे इंक्लूड हेई चालुसंती कोन नै म देखो जो तमे हाई पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज कहउचो ताकू डिफाइन करिवो कोन दैट नॉट रिलेटेड टू द हॉटस्पॉट स्पीसीज एग्जैक्टली ये आपनकर स्पीसीज माने हाई पॉपुलेशन ऊपर जेतले पॉपुलेशन बढ़ी जीवो सेतबेले आपनकर थ्रेट ही कोन पे आसीबो जोठी आपनकर एंडेमिज्म आसी जाय सेठी हमें देखिबा कि डिफरेंट थ्रेट आसी जाय इनवाजिव रहि जीवो कोटा आपनकर एंडेजर्ड स्पीसीज रे आसीबो कोटा हमें रेड डाटा बुक रे ऐड करिबा कोटा को स्किप करिबा हैला ता अकॉर्डिंग त माने देखिबो मैम हाई पॉपुलेशन नो हाई पॉपुलेशन नो सब बेले हाई एंडेमिज्म को फोकस करिवो हॉटस्पॉट कथा जेते बेले पचारिवो हाई एंडेमिज्म को फोकस करी ठीक अछि नेक्स्ट कथा म देखो व्हिच इज एन इन सितु कंजर्वेशन मेथड या भीतर मते कहिलो कोटा गोटे इन सितु कंजर्वेशन मेथड व्हिच इज एन इन सितु कंजर्वेशन मेथड क्विक बोटानिकल गार्डन जोटा कि गोटे आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट रहिवो botanical garden is always outside the natural habitat होना नहीं मते को that means ये आपनकर x सितु रे पळेबो जे outside the natural habitat रहिला that is a x सितु conservation yes or no that means जो आपनकर कोन हे जीवो that's also the x सितु conservation seed bank is also x सितु conservation रहिला कि हमरो now one and only biosphere is of that protects the species in their natural ecosystem that is the in situ one yes or no yes ha nearby नंदनकानन हो आसा the red data book is published by अच्छा मते कहिलो त माने सुनिछ आगुरु red data book रा काम कोन red data book रा काम कोन जानिछो जेते सब endangered species रहिले जेते सब invasive species रहिले से मानकर डाटा धीरे धीरे से माने विलुप्त प्राय हे जिवे तो तांको हमें जानिबा केमिति डायनासोर हमर थिला राइनोसोर थिला ए माने हमें जानुछे केमिति कोठी गोटे मेंशन अछि बुक रे बोली हमें जानुछे एते विशाल काय शरीर अछि तार बोन स्ट्रक्चर एमिति तार स्ट्रक्चर एमिति एवरीथिंग हमें जानुछे केमिति मेंशन हे कि अछि बोली तो जो इनवाजिव स्पीसीज माने धीरे धीरे विलुप्त हे जाउछंती से माने को रेड डाटा बुक रे मेंशन करि के रखा जाय कि हमर नेक्स्ट जनरेशन आसिले से माने पढिबे एंड देखिबे ए टाइप रो स्पीसीज माने भी बंची थिले तो एटा आपनकर रेड डाटा बुक ये पब्लिश किए करे आपनकर यूएनईपी कोन ता दिस इज द एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनई ई फॉर आपन माने जानि देबे दैट इज रिलेटेड विथ द एनवायरनमेंट होना नहीं द आईयूसीएन वेरी गुड लोपा द आईयूसीएन रेड डाटा बुक आपन माने जानि थिबे दैट पब्लिश कोन ग्लोबल रेड लिस्ट को नै के पब्लिश करे द रेड डाटा बुक्स हमें ताको कहूछ होना नहीं and the WWF कहले कोन बुझिछो what do you mean by the WWF कहले कोन बुझिछो एटा गोटे एनजीओ संस्था में जानि परिबा द इंटरनेशनल एनजीओ that not involved in the कोन आरडीबी पब्लिकेशंस बाकी रहिला सीबीडी सेक्रेटेरिएट that is implementation the biodiversity convention ये आपनकर कोठी बीडी अछि माने कोन क्लाइमेट बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन को नै किए आपनकर कंसिस्ट होछ क्लियर नेक्स्ट आसा मते कुआ The Ramsar Convention deals with Ramsar Convention आपनकर कहा सते डील करथुवा समस्त जानिछ बहुत भलो भाबरे जानिछ जल्दी खो hazardous waste को नै कि आपनकर बेसल कन्वेंशन हमें ताकू कोन कहूचे ना बेसल कन्वेंशन बोली कहूची बाकी रहिला किए ना ओनली एंड ओनली वेटलैंड्स तो वेटलैंड्स मानु को नै कि हमें कोन कहूचे द कंजर्वेशन ऑफ माने कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स ताको हमें नोचे डाटा बुक रे सॉरी हमर वेटलैंड्स रा कंजर्वेशन रामसर साइट रे ऐड करि के रखुचे ओजोन डिप्लीशन दैट इज आपनकर ओजोन ऊपर किछि भी आसिले आपन मान जानसंदी कोन ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओने पडुछि ना नहीं कोतिरे ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एटा मेंशन होउछि व्हाट्स अबाउट द न्यूक्लियर सेफ्टी मते को न्यूक्लियर सेफ्टी आपन माने जानचंती कि गोटे होउछि कोन ना IAEA what is that International Atomic Energy Agency that is International Atomic Energy Agency for the nuclear safety होना नहीं yes very good चलो next मते कहइबो the major cause of ozone depletion अच्छा major cause कोन होउची आपनकर ओजोन डिप्लीशन रे मते कहिलो मेजर कोन रहिबो किते जण लोपा मुद्रा जी क्लास रे अछंती
लोपामुद्रा सेठी लोपामुद्रा नायक हो मते को द मेजर कॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन कौन हबो कार्बन डाइऑक्साइड केबे हबो कि कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन कॉज द ग्लोबल वार्मिंग कौन करिवो आपन को सब गुडा सिमिलर साउंड्स आसीबो बट दैट्स नॉट ऑलवेज राइट the CFC that is the chlorofluorocarbons that release the chlorine radicals which destroy the ozone molecules so only one and only आपनकर कोन ना chlorofluorocarbons ही हम बुझी पाला नहीं मिथेन हेले हमें कोन कहूचे that weak ozone impact compared to the CFCs आपनकर chlorofluorocarbon को जति हमें कंपेयर करूचे this is also a major cause माने causing agent of the ozone depletion but as compared to the chlorofluorocarbon this is the weaker one ओके ताकू नेकी रिलेट करिवो एसिड रेन कोन कहउछ एसिड रेन आपनकर कोथरे हुए ना मैम SO2 प्लस आउ का को नेकी हुए ना NO2 SO2 एंड NO2 को नेकी हुए तो दैट कॉजेस द एसिड रेन हन नै मते को सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड यस चलो नेक्स्ट मते कहिबो द फोटोकेमिकल स्मोक कंटेन्स अच्छा मते कहिलो फोटोकेमिकल स्मोक्स आपनकर कोन कंटेन करे फोटोकेमिकल स्मोक आपनकर कोन कंटेन करे क्विकली कहिलो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट दैट इज द क्लासिकल स्मोक हमें कोन कहिबा एटा आपनकर जो क्लासिकल ए जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट आपन माने मन रखंतु याको हमें क्लासिफाई करिचे अंडर द क्लासिकल स्मोक कोथिरे ना क्लासिकल स्मोक रे हैला एंड ए क्लासिकल स्मोक आपण कर कोठी देखिया को पाइबे एग्जैक्टली लंडन रे आपण एटा को देखिया को पाइ तो आउ कोन रहउची ओजोन एंड पैन वेरी गुड लोपा कोन नइबो दैट इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फॉर्म्स अंडर द सनलाइट लाइक आपण कर लॉस एंजल्स वाला स्मोक को आपण नै परिबे द ओजोन एंड द पैन हैला चल नेक्स्ट वन देखो यूट्रोफिकेशन मींस यूट्रोफिकेशन जानिचो केबे सुनिचो कान रे पडिची वर्ड ता तो मते को यूट्रोफिकेशन मींस व्हाट कौन यूट्रोफिकेशन माने देखी कहिलो टिके जल्दी यूट्रोफिकेशन मींस व्हाट दैट increase the DO no DO actually कौन हुए decrease in the eutrophication आपनकर decrease हे जाय nutrient enrichment D कोथि पाई लोपा D नहीं D आगर exotic species information sorry introduction no एटा आपनकर nutrient enrichment आसीबो yes लोपा गोटे लोपा आंसर दोची फोन गोटे लोपा आंसर दोची ठीक म का को लोपा को जो लोपा ठीक दोची से बुझी जा हला दी जण लोपा ही आज क्लास रे प्रेजेंट अच्छा ओके देखो तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कोन कहूची ता एक्सेस नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स सेते बेले आपनकर कॉजेस करंती algal bloom कोन ना एक्सेस ऑफ द नाइट्रेट्स and हमें कोन कहि परिबा ना द फॉस्फेट्स causes algal bloom आपको हमें कौन कहूचे that is the that is the eutrophication हने नहीं को temperature decrease कहले that is not also related the exotic species introduction ताको हमें कहबा that is a different ecological issue हने नहीं next मते को the primary air pollutant कहा को हमें कहूचे what is the primary air pollutant from all of the below प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहले कोन बुझिछो द ग्राउंड लेवल ओजोन आपनकर प्राइमरी पोल्यूटेंट हे परिबो की दैट फॉर्म द सेकेंडरी फ्रॉम द कोन ना NOx और द VOC दिस इज द सेकेंडरी हन नै द प्राइमरी आपनकर के रहइबो सल्फर डाइऑक्साइड जे की डायरेक्टली रिलीज होची कोठो रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्रीज द वोल्केनोस एथुर आपनकर डायरेक्टली रिलीज होची तो हमें कहि परिबा ताको द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हन नै को द पैन हेले ये आपनकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट स्मॉग हेले ये आपनकर मिक्सचर और सेकेंडरी हमें कहि परिबा दैट इज द स्मॉग नेक्स्ट देखो द IPCC वाज फॉर्मड बाय IPCC आपनकर कोथि पई फॉर्म होची मते कहिलो व्हाट इज IPCC एंड IPCC आपनकर कोथि पई फॉर्म होची क्विक जल्दी आंसर दियो व्हाट इज IPCC
ऑप्शन सी आसुची केमिति काहे कि लोपा नो टू ना दैट इज द यूएनईपी कौन हबो राइट आंसर कौन हबो तो IPCC माने कौन दैट इज द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आई स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल पैनल फॉर climate change that is the IPCC and याकू किए याकू मैनेज करूची that is formed by whom that is formed by the IPCC माने कि UNEP and the WMO हैला केते केबे हेइथिला it was founded in 1988 रे फाउंड हेइथिला एति कि मन रहि परिबो UNFCC कहिले कोन बुझछ UNFCCC कहले कौन बुझ दैट इज अ क्लाइमेट ट्रीटी बॉडी हमें कहि परिबा द यूएनई माने यूनेस्को कहले कौन एटा हमर एजुकेशनल हैला कल्चर हैला तो एटा आपनकर एजुकेशनल हैला और कल्चरल हैले बुझी परिबा व्हाट इज IMF स्टैंड फॉर दैट इज MFE अछि दैट मींस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटा आपनकर कोथरे छिबो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्लियर बुझी पारला चलो नेक्स्ट मते कहबो द CBDR प्रिंसिपल अप्लाइज टू CBDR जल्दी कहिलो द CBDR प्रिंसिपल दैट अप्लाइज टू व्हाट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे आपनकर CBDR लागि परिबो कि मते कुह CBDR is the central legal policy माने कोन प्रिंसिपल of the UNFCC जोडा कि आपनकर कोथरे ना कीटो रे लागि परिबो and UNFCC रे लागि परिबो Montreal that uses the responsibility principle but not the CBDR by the term हैला चलो नेक्स्ट मते को energy not solar derived energy not solar derived that means ये आपनकर कोठु आसुची energy not solar derived that is a wind derived that is a hydro tidal biomass कौन हबो मते को जल्दी wind आपण कहि परिबे that is generated by the different solar heating process रे आपनकर wind आसी जिवो but right कौन हबो that is the tidal right कौन हबो ना that is driven by the कौन gravitational pull of the moon and the sun मते कुह driven by whom the gravitational pull of the moon and the sun जुआर and भट्टा पढिछ आगुरु जानिछ हन नै को मते यस नेक्स्ट चलो बायोमास दैट डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेसिस बायोमास कथा एठी को कोड तो मन को माइंड को आसीला बायोमास तो टोटल आपनकर कहा ऊपर ना फोटोसिंथेसिस ऊपर डिपेंड करिवो टाइडल ही आपनकर एनर्जी रहउची सोलर एनर्जी ऊपर कारण सन ऊपर मून ऊपर आपनकर डिपेंडेंट रहिबो हैला नेक्स्ट चलो द फर्स्ट जीएम क्रॉप इन इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मते को द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया रे में कहा को अप्रूवल देइछे गोल्डन राइस ए पर्यंत अप्रूव हेइनी इंडिया रे बीटी ब्रिंजल भी हमरा अप्रूव्ड हेइनी ए पर्यंत इवन द जीएम मस्टर्ड भी आपनकर हेइ नाही हन नै मते को आमे कहि परबे दिस बीटी ब्रिंजल एंड जीएम क्रॉप मस्टर्ड ए पर्यंत हैंगिंग कंडीशन रे अछि बट द बीटी कॉटन आपनकर केबे 2002 रु ही आपनकर अप्रूवल पाई सारिची द फर्स्ट अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन 2002 इज द बीटी कॉटन मन रहिबो नेक्स्ट द क्रिस्पर रिलेट्स टू CRISPR-Cas9 सोर्स गोटे जाइथिले आपन मन देखिथिबे सिकल सेल एनीमिया को नै कि होप आपन मन देखिथिबे हां नै द CRISPR रिलेट्स टू व्हाट म देखो न्यूक्लियर फिशन की नो द न्यूक्लियर fission is related with the splittings of the heavy atoms that is unrelated with the CRISPR the gene editing yes the CRISPR सामे कोन कहि परिबा the CRISPR-Cas9 codes and edit the specific DNA sequence whether it is unhealthy then it can replace with a healthy one so this is a genetical editing tool the CRISPR आमे यूज करि परिबा CRISPR-Cas9 is a gene editing tool carbon capture that is a climate माने कोन climate technical words आपनकर communication is a different not related next मते को navic relates to navic already मु ऐप रे पढैछि ऐप लाके प्रेजेंट हम नाहति हैला तो मते को navic relates to what that is related with the trains navic आपन माने कोन बुझुचंदी ट्रेन बुझुचंदी navic
नाविगेशन बुझुचंती, न्यूक्लियर एनर्जी बुझुचंती, वेदर मूड बुझुचंती, कौन बुझुचंती? ट्रेन्स बिल्कुल नहीं, तो नाविक मीन्स आपनकर नाविगेशन। इंडिया रो रीजनल नाविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हमें कौन कहूचे ना IRNSS। ए IRNSS जोटा कि इंडिया रो ओन रीजनल नाविगेशन सिस्टम, इंडिया रीजनल माने इंडियन रीजनल नाविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS ताको हमें कहूचे दैट इज द नाविक जोटा कि इंडिया रो नाविगेशन हैला। बुझी पारिलो? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मते को फिशिंग माने माछ मारिबा ना कि, तो मते कहला फिशिंग रेफर्स टू व्हाट? दैट इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस, फ्रॉड, ईमेल्स, वायरसेस और द DDoS। फिशिंग माने तो माने कोन बुझुचो? जल्दी कहिलो फिशिंग माने कोन बुझुचो? अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमें कोन कहूचे? ताको हमें हैकिंग कहूचे। अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमें कोन कहूचे? ताको हमें हैकिंग कहिबा, नॉट कि फिशिंग। होनो नै? तो फिशिंग एठी का कहिबा? तो फिशिंग कौन कहले? दैट इज द फ्रॉड ईमेल्स और द मेसेजेस सेटा आपन पाखु आसुची, दैट इज द ट्रिक ऑफ द कोन यूजर्स इंफॉर्मेशन माने ट्रिक्स यूजर्स इनटू माने जे कोनोसी इनटू द रिवीलिंग पर्सनल डाटा, जे पर्सनल डाटा को ट्राई करंती चोरी करिबा लागि ताको हमें कहूचे दैट इज द फिशिंग। भाइरस आर द मालवेयर अटैक्स रे भाइरस टिबो, DDoS आपन करो दैट इज द फ्रॉड माने फ्लडिंग कोन आपनकर सर्वर विद द ट्रैफिक जेते कोंदी ना आपनकर सर्वर डाउन अछि, तो सर्वर डाउन रे आपन माने कोन अछि दैट इज द DDoS। नेक्स्ट मते को नैनोटेक साइज रेंज, नैनो टेक्नोलॉजी रो साइज रेंज करे कोठी? नैनो टेक्नोलॉजी रो साइज रेंज करे को जगह रे? मते को सेंटीमीटर रे में कहूचे कि सेंटीमीटर इज टू लार्ज, नैनो हमें कहूचे, नैनो मीन्स सब बेले कोन ना स्मॉलर सेक्शन को बुझीबा, दैट मीन्स द 1 to 100 nanometer रे कोथरे ना 1 to 100 nanometer रे। वेरी गुड, दैट इज द ट्रू नानो स्केल ऑफ द डायमेंशन। नेक्स्ट नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, या भीतर कोटा गोटे ग्रीन हाउस गैस नुह गाइस जल्दी कहिला, व्हिच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? क्विक, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस हे परिबो कि? नो 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 नो। राइट आंसर कोन हबो? मेजर आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड अछि, CH4 अछि, N2 अछि, बट N2 आपनकर हबो कि दैट इज केमिकली इनर्ट इन नेचर, that doesn't absorb the infrared radiation, so आपनकर CH4 एटे पचासी नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, CH4 आपनकर मेन ग्रीन हाउस गैस ताको केमति कहछ नॉट पचारिछि, नॉट पचारले N2 को जीवो, नॉट पचारले कोडी N2 को जीवो, दैट इज केमिकली इनर्ट थाय नेचर, यार नेचर कोन ना इनर्ट। नेक्स्ट मते को द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें काहा को कहिबा? व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? को What is the sustainable development, guys? Quick. The sustainable development industrial fast model आपनकर हेई परिबा कि? No, that is not a balanced sustainability. The present needs W or O ये हेई परिबा कि? Yes. The meeting present needs without harming the future. Without harming the future, that is the sustainable development. That means आमरो फ्यूचर रे जहा भी होउचे हम एबे जहा भी करूचे आगो को किछि भी सिचुएशन आसु एटा हमको इफेक्ट करिवो नाही, किछि बैड इंपैक्ट पड़िवो नाही, ताको हमें कहिबा दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होना नै मते को टिके क्वेश्चंस अकॉर्डिंग ऑप्शंस उडा को जदी डीपली पढी दबो आंसर देई परिबो। नेक्स्ट मते को द EIA ऑलरेडी कहि सारिछि, व्हाट इज द EIA? जल्दी को EIA increasing the GDP, no economic policy nor the environment आपनकर GDP growth पाई related, but EIA आपनकर कोन कहबा that related with the environment assessment, yes that is related with what now the predicts ecological effects of the future projects, है हां चलो the limited to renewable energy projects। next the highest biodiversity अपन माने कोन बुझिबे? what do you mean by the highest biodiversity? highest biodiversity desert हबो कि? desert आपनकर species according देखियो जदी that is the poor ecosystem, यार इकोसिस्टम आपनकर कोन desert रे बहुत ही poor ecosystem होना नै। तुंद्रा को हमें केबे कंसीडर करिबे कि that's also very low biodiversity due to the cold climate,
yes or no तो रहिला किए ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहिबो वन एंड ओनली yes that is the highest species richness and the कोन ना नीचे डाइवर्सिटी कोन रहिबो ना इथे आपनकर नीचे रहिबो next biomagnification means मते को biomagnification means what biomagnification means कोन बुझुच जल्दी कुह population rise increase in the population is the demographic term this is not a biomagnification again saying increase in the pollutant eta हे परिबो कि increase in the concentration rise और हमें कहि परिबा increase in the pollutant concentration that is a toxic substance magnifying at the higher trophic levels that can be the biomagnification means mostly appropriately explain the right होना नहीं the increase in the micro of numbers आपनकर that is a magical growth next को sorry aso the last one the best waste management kon rahibo best waste management apankar kon rahibo mate kohtu landfill that is the incineration or the recycling or the dumping कोटा हवा right answer quick best waste management landfill केमती हबो the last option हमें कहि परिबा but due to the pollution according हमें landfill नहीं परिबा incineration that produces the emissions recycling yes the best waste management आपनकर कोन हबो ना जदि हमें ताको recycling करी कि पुन थरी यूज करि परिबा that reduces the raw material use best sustainable method for the best waste management होना नहीं को the open dumping ता आपनकर open dumping हिला that is the worst one जदि best आपनको पचारा गला recycling जदि एटी worst पचारा दिथांदा ताहाले हमें कोइ परथांदा that is the dumping is what dumping is the open dumping होना नहीं को मते yes very good चलो so it was all about your today session thank you so much आपण मानकू pdf मिली जिवो वेदांत क्लासेस रो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु ठीक अछि thank you so much bye bye good night take care देखा again राति 10 रे thank you so much